हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जावा प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। एंड डोंट वरी, अगर आप जावा बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, this video is specially for you. Today we will write our first program, that is hello world, using a very simple tool, that is notepad. But before writing the program, we need one important thing, that is JDK. So let's start from the very beginning. Okay. JDK stands for Java Development Kit. If we want to develop and run Java program, we need Java Development Kit, जिसे हम JDK बोलते हैं. JDK provides the tools required to write, compile and run Java programs. ओके, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो JDK इक्वल टू जावा प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड किट. Okay, so before writing our first program, let's install the JDK. First, you can open your browser. Okay, then search for Java JDK download. Java JDK download. Always download JDK from a trusted and official source. For example, you can use the official Java website. Here, okay, that is Java www.oracle.com. Click on Java downloads. Here we can find different Java versions, JDK 26, JDK 25, JDK 21. Okay, for learning purpose, install a current supported JDK version, that is JDK 26. Download the installer according to your operating system. For example, यहाँ पे Linux है, Mac OS है, Windows है. Okay, okay, तो आपको क्या करना है, विंडोज पे क्लिक करना है एंड हियर once the JDK is installer is open the installer. Okay, now simply follow the installation steps. इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम नॉर्मली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही JDK को इंस्टॉल करना है. ओके, नाउ लेट्स चेक वेदर आवर JDK इज इंस्टॉल्ड करेक्टली. ओके, यहाँ पे विंडोज में जाके आपको टाइप cmd then and press java space hyphen version. Java is installed correctly, you will see the installed Java version. Okay, you should also see the Java compiler version, then you can use Java C space hyphen version. That is our compiler version. Java is used to run Java applications while Java C is the Java compiler used to compile Java source code. स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझना है, व्हेन वी राइट जावा कोड द कंप्यूटर डज नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूट आवर .java source code. First we compile the source code using the Java compiler. The command is Java C. So remember, Java C for compile and Java is for run. Okay, then open notepad. My first program. Before I explain the program, let's type the complete code. Okay, this is our complete hello world program. Okay, the first line is class hello world. Okay, this line creates a class named hello world.
Java is an object-oriented programming language and our program is written inside a class. Okay, here Hello World is our class name. Hello World is our class name. ओके, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड. देन नेक्स्ट इज योर कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग ब्रैकेट्स जिसे हम बोलते हैं. दिस कर्ली ब्रैकेट्स इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द क्लास बॉडी. ओके, देन third is your main method, public static void main string args. This is your main method. Now this is the most important line of our beginner Java program. Okay, the main method is the starting point of the Java program. जब हम जावा प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम दी मेन मेथड. इस मेथड से हमारा एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टार्ट होता है. देन थिंक ऑफ अ मेन एज द एंट्री पॉइंट ऑफ आवर जावा प्रोग्राम. प्रोग्राम को स्टार्ट करने का सिग्नल यही से मिलता है. ओके, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट println in parenthesis in double quote hello world. Okay, this statement prints the message on the screen. Here we have a written hello world. So when we run our program, the output will be hello world. ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा. मतलब हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं प्लीज डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन दी स्क्रीन. ओके, नाउ वी नीड टू सेव आवर जावा प्रोग्राम. ओके, now we have our Java source file. Next we need to compile it. Okay, first click on files, click on documents, click on Java programming, and here you can type cmd. Now comes to the most important step is compilation. Okay, type here Java C space program name, that is hello world dot java. Important point is class name and program name should be same, and your class name always start with what, capital letter. Press enter. If there is no error message, our program has been successfully compiled. After compilation, Java creates a class file. So now we will have something like okay, that is your class file, hello world dot class file, hello world dot java file. Okay, remember dot java is a source code and dot class is a compiled bytecode. Okay, now our program is compiled. Let's run it. Okay, type java space hello world and you will see the text that is hello world. Okay, you have successfully written and execute your first Java program. Student, let's quickly understand the complete process. Okay, the first is write your Java program, then save as a program name.java, then compile using Java C, then it will create class file, that is dot class file, run using Java, then हेलो वर्ल्ड. तो बेसिकली प्रोसेस बहुत सिंपल थी. आपने राइट किया, फिर सेव किया, फिर कंपाइल किया, रन किया, एंड देन फाइनली आउटपुट. बस ये 5 स्टेप्स याद रखो. कॉमन बिगनर. ओके, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेट्स लुक एट सम कॉमन मिस्टेक्स. क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्राम नेम डॉट जावा डॉट txt, that is not a correct extension. Okay, you can write program name dot java. Then second mistake is class name mismatch. If your class is class hello world, then the file should be
hello world dot hello world dot java. Then forgetting semicolon. For example, system.out.println in parenthesis hello world. Don't forget the semicolon. Then using Java C incorrectly. Java C program name dot Java and the run is Java program name. Don't write Java hello world dot Java when running the compiled class in this basic workflow. Okay, so students, today we learn how to write and execute our first Java program. We installed JDK, checked the Java version, opened the notepad, wrote our first hello world program, saved it as a .java file, compiled it using Java C, and finally executed it using Java. And remember our first formula: Java C equal to compile and Java equal to run. And the most important formula is, first you can write your code, then compile, then run, and the final output will be displayed. If you understand this, okay, then your Java programming journey has officially started. If you found this video useful, like the video, subscribe to the channel, and stay connected for the next Java video. See you in the next video.